अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जैन एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 2311। सर, जैसे कि हमारी आज की असाइनमेंट थी कैनी एज डिटेक्शन के बारे में। कैनी एज डिटेक्शन जो होता है वो क्या चीज़ होती है, हम इसके बारे में बताएंगे और इसके फर्दर। कैनी एज डिटेक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग शार्प डिसकंटिन्यूअस in the image. Different modes of edge detection are available in computer version. They are reports cross operator, Sobel operator, Previtt operator, Laplacian of Gaussian filter, Canny edge detection algorithm. ये 5 different methods हैं जो ये इसको जो explain करते हैं. Now first of all we will tell about mostly widely used edge detection algorithm gradient of Gaussian Canny edge detection algorithm. Why Canny edge detection algorithm? We have considered Canny edge detection techniques with reference to the following criteria. Detection. The probability of detecting real edge points should be maximized, while the probability of falsely detecting non-edge points should be minimized. This corresponds to maximizing the signal to noise ratio. इसके अंदर वाई कैनी एज डिटेक्शन के अंदर एल्गोरिदम के अंदर हमें 3 स्टेप्स मिलते हैं, एक डिटेक्शन, एक लोकलाइजेशन और तीसरा नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज. लोकलाइजेशन क्या चीज़ होती है? द लोकलाइजेशन इज द डिटेक्टिव एजेस शुड बी वेरी क्लोज टू द रियल एजेस. हमने जो डिटेक्ट किए हैं वो रियल के बहुत ज़्यादा क्लोज है. दे विल बी मिनिमाइज गैप बिटवीन द रियल एज एंड द डिटेक्टिंग एज, और उनका जो है गैप भी बहुत कम है. थर्ड वन इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस. वन रियल एज शुड नॉट रिजल्ट इन मोर देन detected angle, detected edge. Steps in Canny edge detection algorithm. Canny edge detection algorithm runs mainly of 5 sequential steps. Number 1 is smoothing. Number 2 is the finding gradients. Number 3 is the non-maximum separation, and number 4 is the hysteresis thresholding. The first one is tell about the smoothing. Smoothing image take from a camera will certain some amount of noise. Smoothing के अंदर जो है लाजमी बात है noise लाजमी होगी. As noise can mislead the result in finding edges, we have to reduce the noise. Therefore the image is first smoothed by applying the Gaussian filter. Image के अंदर noise होगी, जब हम उसके अंदर Gaussian filter apply करेंगे तो noise को automatically कम कर देगा. The Gaussian filter multiplies each pixel by image by the kernel generated. It is returned to the smoothed image in the 2 dimension. हमारे पास ये एक आ गया है, इमेज आ गई है, हमने गॉसियन फिल्टर के हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास वो जो है नॉइज रिमूव हो जाएगी. दूसरा टाइप है इसकी फाइंडिंग ग्रेडियंट्स. हेयर वी जब हम स्मूथिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम जो है इसको ग्रेडियंट के लिए भेज देंगे. हेयर वी फाइंड द एज स्ट्रेंथ बाय टेकिंग द ग्रेडियंट ऑफ द इमेज. द सोबल ऑपरेटर परफॉर्म अ 2D spatial gradients measurement on an image. The Sobel operators use a pair of 3 class 3 convolution masks, one estimating the gradient in the x direction and the other estimating the gradient in the y direction. हमारे पास ये दो आ गए हैं, जी एक्स और जी वाई. तो इसको जब हम करेंगे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी. नाउ द अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड हमारे पास जो है हर पॉइंट के ऊपर जी इज इक्वल टू जी एक्स का स्केयर प्लस जी वाई का स्केयर होल स्केयर रूट आ जाएगा, और इसकी जो ओरिएंटेशन है वो tan इनवर्स जी एक्स ओवर जी वाई आ जाएगी. द थर्ड स्टेप इज नॉन मैक्सिमम सेपरेशन. ये होती है इसके अंदर जो होते हैं हम क्या करते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन नॉन मैक्सिमम टेक्निक्स यूज़ करते हैं. दिस इज यूज टू कन्वर्ट द ब्लड इमेज इन द इमेज ऑफ द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड टू शार्प एज, एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय कंसीडरिंग only a local maxima in the gradient image and detecting rest. The algorithm applied for each pixel in the gradient image. Finally, only local maxima has following and edges. और इसका जो चौथा है वो है hysteresis thresholding. जब नॉन मैक्सिमम सेपरेशन के बाद जो है द एज विल पिक्सल विल बी स्टिल मार्क्ड विद देयर स्ट्रेंथ पिक्सल बाय पिक्सल. सो वो एक they received image may still contain false edge points. Using threshold, potential edges are determined by double thresholding. हम threshold इस्तेमाल करके जो है उसका potential edges जो है find कर सकते हैं. If the gradient pixel is above high, declare it is an edge pixel. Below low, declare it a non-edge pixel. Between low and high, consider its neighboring relatively, then declare it is an edge pixel if it is connected to. An edge pixel trajectory are via pixel between low and high.
ये हमारे पास वो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड है। हाई स्ट्रेस से अगर ऊपर होगा तो वो हाई होगा, नीचे अगर उसके लिमिट से, तो ग्रेडियंट की लिमिट से नीचे होगा तो वो हमारे पास लो होगा। इसके अंदर उसमें क्या दो चीज़ें होती हैं, अगर आपका लिमिट से ऊपर है तो वो हाई है, अगर लिमिट से नीचे है तो लो है। द परफॉर्मेंस ऑफ कैनी डिटेक्शन एल्गोरिथम क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑफ कैनी एल्गोरिथम डिपेंड्स हैवीली ऑन द एडजस्टेबल पैरामीटर्स sigma, which is the standard deviation of the Gaussian filter, and the threshold values high and low sigma also control the size of the Gaussian filter. The bigger the value of sigma, the larger the size of the Gaussian filter becomes. This amplifies more blurring necessary for noisy images as well as detecting large edges. As expected, however, the larger the scale of the Gaussian, the less accurate is the localization of the edge. Small values of a sigma imply a smaller Gaussian filter which limits the amount of blurring, maintaining finer edges in the image. This can be tailored by algorithm by adjusting these parameters to adapt to different environments. Canny edge detection algorithm is computationally more expensive compared to the Sobel, Privet, and Roberts operator. However, however, Canny edge detection perform better than all these operations under almost all scenarios. तो ये हमारे पास कैनी डिटेक्शन चीज़, अगर हम इसका हम कोड मैट्रैप पे रन करें तो वो हमारे पास ये शो कराता है। सबसे पहले हमने सिग्मा की वैल्यू 70 ले ली है, फिल्टर साइज जो था 5 है, इमेज जो हमने ये अपनी उठा ली है, ठीक है। तो इमेज को RGB2 ग्रे किया है, इसके अंदर हमने सबसे पहले गार्जियन फिल्टर अप्लाई किया, फिर हमने स्मूथ इमेज की है। तो F स्पेशल करके जब हमने इसको फाइनल ग्रेडियंट X और ग्रेडियंट Y दिया है, तो उसके बाद जो है जब हमने इसको हाई थ्रेशोल्ड 0.2 दिया और लो थ्रेशोल्ड 0.1 दिया, तो हमारे पास जो इमेज बनी है वो हमारे पास एक ये बन रही है। ये ओरिजिनल इमेज थी और हमारे पास जो कैनी डिटेक्शन के बाद हमारे पास ये इमेज बन रही है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था कैनी डिटेक्शन था। आई होप कि आई परफॉर्म माई बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।